earlier class, we have studied the sources and validity of knowledge. So, in this class, we will start with the basis of knowledge according to the Indian and Western philosophy. So, according to the Indian philosophy, the theory of knowledge are of four types, which are pramata, prameya, pramana, and pramiti. So, pramata is the knower who has knowledge, which means that the authoritative person who has the knowledge, as in Guru Shishya Parampara, the Guru has the knowledge and the students as Shishya believe that the Guru has all the knowledge and that is only the truth. So Pramata means the knower या गुरु जिसके पास संपूर्ण ज्ञान है, संपूर्ण नॉलेज है, वही आपका प्रमाता है. प्रमेय होता है the knowables about which can be known. प्रमेय मतलब नोएबल्स वो वस्तुएं या वो ऑब्जेक्ट्स या कुछ भी जो भी इस फिजिकल वर्ल्ड में यूनिवर्स में प्रेजेंट है जिसके बारे में जाना जा सकता है, ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है, दैट इज कॉल्ड प्रमेय. द प्रमाणा वुड बी द प्रोसेस ऑफ नोइंग. प्रोसेस जिसके बारे में जानना है, उसको जानने का, जिसके बारे में जानना है उसको कैसे जाना जा सकता है, दैट इज प्रोसेस. एंड द प्रमाणा इज the process of knowing. So the next one is pramiti. Pramiti is the knowledge achieved by the praman. Pramiti वो knowledge है जो प्रमाण के थ्रू हमने अचीव की है या जाना है. तो four sources of knowledge are there in the Indian philosophy to gain knowledge, which are pramata, prameya, pramana, and pramiti. Pramata is the knower who has the complete knowledge. Prameya will be the knowables or objects which can be known. And the pramana is the process of knowledge by which we gain knowledge about the things. In the pramiti, the result part, that knowledge is achieved by pramana. So the next slide, we will come on to the next thing, which is basis of knowledge according to Western philosophy. Western philosophy में 5 प्रकार के सोर्स हैं जो कि हमने पहले भी डिस्कस किए हैं, which are senses, reasoning, intuition, authority, and faith. These are the 5 sources of knowledge in Western philosophy, which we have discussed earlier as senses जो हम अपने सेंस ऑर्गन के थ्रू प्राप्त कर सकते हैं, that is sensory knowledge. Reasoning knowledge is that जो हम तर्क के आधार पर ज्ञात करते हैं. Intuition जो कि हमें अपने इंट्यूशन के थ्रू ज्ञात होता है, हमारे अपने बिलीव्स होते हैं उनसे हम ज्ञात करते हैं वो नॉलेज. फेथ हमारे जो विश्वास होते हैं उनसे हम जो नॉलेज प्राप्त करते हैं. अथॉरिटी दैट इज अथॉरिटेटिव पोजीशन के जो पर्सन है उसके थ्रू जो हम नॉलेज प्राप्त करते हैं, दैट इज वेस्टर्न फिलॉसफी. द नेक्स्ट वन विल बी द डिफरेंस बिटवीन नॉलेज एंड स्किल्स. नॉलेज एंड स्किल्स में क्या डिफरेंस है? Knowledge and skills are the two main things which we can differentiate. Knowledge is reference to a particular subject. Knowledge includes theory. Skill is a learned ability that is acquired through practice or training or experience by doing any work properly. वही डिफरेंस जो कि थ्योरी और प्रैक्टिकल में है, वही डिफरेंस नॉलेज और स्किल में है. नॉलेज इज द थ्योरी पार्ट एंड स्किल इज द प्रैक्टिकल पार्ट. जो भी हम सीख रहे हैं किसी भी सब्जेक्ट के बारे में, थ्योरी जहाँ पे इंक्लूडेड है, दैट इज कॉल्ड नॉलेज, एंड द स्किल इज द एप्लीकेशन ऑफ दैट नॉलेज, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दैट नॉलेज इज कॉल्ड स्किल. सो नॉलेज इज यूजुअली गेन्ड थ्रू एजुकेशन, hence it is not inherent. Some skills can be inherent. नॉलेज जो है यूजुअली गेन चुकर की जाती है, वो किसी के द्वारा हमें याद की जाती है, हम प्राप्त लेते हैं किसी के थ्रू. नॉलेज इनहेरेंट है, गुरु शिष्य को पढ़ाता है तो गुरु के द्वारा शिष्य नॉलेज प्राप्त करता है, तो ये इनहेरेंट कैटेगरी में आती है. इनहेरेंट कैटेगरी में नहीं आएगी, बट जो स्किल है वो इनहेरेंट कैटेगरी में आ जाएगा, क्योंकि स्किल हम किसी से बिना नॉलेज के भी सीख सकते हैं. हमें नॉलेज नहीं है उस चीज़ के बारे में, फिर भी हम उसको सीख कर सकते हैं. जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई भी आपका कारीगर जैसे होते हैं, किसी भी तरह का जो काम करते हैं, वेदर इट इज़ अ कारपेंटर, कोई ज्वेलरी मेकर है या एनी अदर ऑफ दैट, वो आपके किसी भी नॉन पर्सन से सीख कर उसको कर सकता है, स्किल एनहेंस कर सकता है. तो वो इनहेरेंट है, उसको पूरी थ्योरी जानने की ज़रूरत नहीं है उस पर्टिकुलर प्रोसेस के बारे में. बट जो नॉलेज है वो हमें
एजुकेशन के थ्रू ही प्राप्त होगी, इसको हम ऐसे ही नहीं इनहेरिट कर सकते हैं किसी से, इसका कोई शॉर्टकट नहीं है। सो नॉलेज कम्स थ्रू एजुकेशन और एक्सपीरियंस। जो नॉलेज है वो एजुकेशन और एक्सपीरियंस से आती है। स्किल कम्स थ्रू प्रैक्टिस। स्किल जो है वो प्रैक्टिस के द्वारा ही आता है। As for example, in your teaching practice, theory part is being taken in the school and college premises as you have learned the various skills like introduction, explanation, lecture, illustration, etc., etc. And when you go to the schools, you implement those skills in practical form in the classrooms. सो एक्सपीरियंस काम आता है, एजुकेशन काम आती है। जब नॉलेज की बात करते हैं, स्किल कम्स टू प्रैक्टिस। स्किल के लिए हमें प्रैक्टिस की ही जरूरत है। वी हैव टू गो टू द फील्ड। नॉलेज रिक्वायर्स वैलिडिटी एंड लॉजिक। नॉलेज को हम वैलिडिटी और लॉजिक से ही एक्वायर कर सकते हैं। स्किल डज नॉट रिक्वायर्स वैलिडिटी और नॉलेज। स्किल के लिए ऐसी कोई भी कंडीशन नहीं है कि उसमें वैलिडिटी या लॉजिक की जरूरत पड़े। आफ्टर दैट वी विल कम ऑन टू द टीचिंग एंड ट्रेनिंग। The difference between the teaching and training is the sharing of knowledge or giving instructions on how to do something. Training is the practical side of learning, provides people skills they need to perform in a certain time. जो difference knowledge और skill में है, some moreover the difference is applicable on teaching and training also. The teaching is the theory part, whether the training is the skill or practical part. एकेडमिक एक्टिविटी है टीचिंग, और ट्रेनिंग आपका लर्निंग प्रोसेस है। जैसे कि आपके बीट सेकेंड ईयर में यू आर गेनिंग द थियोरेटिकल नॉलेज इन द क्लासरूम से, और वेदर you will go to your internships in coming months, and you will gain the training part. Mainly involves theory, involves a practical approach. This is the basic difference. Focus is on education and knowledge. Focus on skills and abilities. Takes place in a classroom environment, and it takes place in a work environment. So this is the basically डिफरेंस इन टीचिंग एंड ट्रेनिंग। टीचिंग एक थ्योरेटिकल पार्ट है, आप एक बहुत ही बेसिक लेवल पे थ्योरेटिकल लेवल पे एजुकेशन गेन करते हैं। प्रैक्टिकल अप्रोच जब आप फील्ड पे जाते हैं तब आपको मिलती है उसके बारे में। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन बिलीफ एंड ट्रुथ के जो बीच में डिफरेंस है। दिस इज द डिफरेंस। बिलीफ जो है वो बहुत ही सब्जेक्टिव अप्रोच है। आपका जो भी बिलीफ है वो आपके अपने तक सीमित है, आप कितना किस पे बिलीव करते हैं या आपकी अपनी पर्सनल अप्रोच है। ट्रुथ जो है वो यूनिवर्सल है, everyone has to believe on that. So we can differentiate truth and belief in the way as shown in the slide. Beliefs are influenced by personal perspectives, cultural values, and individual basis. Whether the truth represents factual information, truth factual information पे based होता है, और belief आपका personal अप्रोचेज होता है, पर्सनल पर्सपेक्टिव्स होते हैं। आप किसी से भी इन्फ्लुएंस होकर आप बिलीव कर सकते हैं इस चीज़ पे, जरूरी नहीं है कि वो सच है। So, from this Venn diagram, you can see the truth and belief intersects. The intersecting area is knowledge. Belief का वो पार्ट जो कि वैलिडेट हो सकता है, ट्रुथ की कैटेगरी में आ सकता है, वही नॉलेज है। Similarly, justification, belief, and truth. These three are intersecting in this Venn diagram, and the intersecting part is knowledge. Justification जब हम ट्रुथ का किसी बिलीफ का कर देते हैं, that is knowledge. मिथ बेस्ड फेथ एंड लॉजिक बेस्ड नॉलेज, ये आपके जो पॉइंट्स हैं, दीज आर मिथ बेस्ड फेथ, यानी कि जो आपके मैथोलॉजिकल बेस्ड फेथ्स हैं, और जो लॉजिक बेस्ड नॉलेज है उसमें ये डिफरेंस है, ये अंतर है कि आपका फेथ लॉजिकली बेस्ड नहीं होता, आप उसको पुरानी कथाओं के द्वारा सुनते आ रहे हैं, अपने पूर्वजों से सुनते आ रहे हैं, आप उन पर विश्वास रखते हैं। बट जो नॉलेज है वो आपका लॉजिकली वैलिड होती है, तभी आपका जो नॉलेज की कैटेगरी में आप उसको रख पाएंगे। पर दोनों ही ज़रूरी हैं पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के लिए। ह्यूमन हिस्ट्री में, कल्चर में, व्हेन वी कॉम्प्रिहेंड द यूनिवर्स, यूज बोथ द थिंग्स। फेथ भी ज़रूरी है एंड नॉलेज भी ज़रूरी है। Similarly, here is a chronological review of the major phases in knowledge generation throughout the history. Initially, traditionally, ancient times में the oral tradition and storytelling method was used to convey the knowledge. After that, early written records are there, ancient philosophical tradition are there. According to the different time zones, early written records, Sumerian, Egyptian और Indus civilization में हम देखते हैं। After that, ancient philosophical tradition जो कि Greek, Chinese and Indian जो आपकी civilization था उसमें हमें देखने को मिलता है। After that, we reached
द लाइब्रेरी ऑफ अलेक्जेंड्रिया जो थी वो काफ़ी ज़्यादा फेमस थी अपनी कलेक्शन के लिए, रिटर्न वर्क के लिए, जो कि उसमें कलेक्शन था डिफरेंट कल्चर्स का। उसके बाद आता है आपका इस्लामिक गोल्डन एज, जो कि 18 से 13 सेंचुरी के बीच है। स्कॉलर्स इन द इस्लामिक वर्ल्ड मेड सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन टू दिस, मैथमेटिक्स, एस्ट्रोनॉमी, डिफरेंट सब्जेक्ट्स में उन्हें कंट्रीब्यूट किया एंड बिकम इम्पोर्टेंट हब ऑफ नॉलेज। After that, we reach the 16th and 18th century के between scientific revolution आता है, जिसमें कि बहुत ज़्यादा लेवल के scientific revolutions हुए, inventions हुई, discoveries हुई. And between 18th and 19th century we have industrialization revolution, जिसमें कि बहुत ज़्यादा industry पे focus था, globalization पे focus था. Then we have modern academy and research institution पे focus था 19th and 20th century के दौरान. और उसके बाद हम इस digital age में है 21st century में, जहाँ पर वर्क की कंप्यूटर्स की, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, मशीन लर्निंग की बात करते हैं और ग्लोबल टॉपिक कोलैबोरेशन की बात करते हैं. तो क्रोनोलॉजिकली टाइम वाइज हम बांट सकते हैं नॉलेज जनरेशन को डिफरेंट कैटेगरीज में अकॉर्डिंग टू द डिफरेंट टाइम. So thank you so much. This is it for now. We will meet in the next class. Thank you.